Hello students, in today's lecture we are going to obtain the expression for the fringe width in the interference pattern. Okay, now it is the setup. It is the plane of the slits, the source S, the slits S1 and S2, and the screen is placed at the distance capital D from the plane of the slits. Okay, now let us suppose small d be the distance, between the plane of the slits. तो बेटा सोर्स से लाइट वेव्स स्लिट्स तक पहुंचेंगी, स्लिट्स से लाइट वेव्स स्क्रीन तक पहुंचेंगी इंटरफियर करते हुए. ओके, तो बेटा ध्यान से देखिए, S1O को देखिए, आप S1O को देखिए. S1 से लाइट जब O पे आती है और S2 से लाइट जब O पे आती है, तो ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ S1O और S2O, ये दोनों पाथ्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों पाथ लेंथ्स एक दूसरे के इक्वल हैं, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है. तो बेटा स्लिट्स से जब लाइट O पॉइंट पे आएगी तो इट विल इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली एंड द ब्राइट बैंड इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट O. ओके, तो याद रखें पॉइंट O पर ब्राइट बैंड फॉर्म हुआ है. ओके, now अब हम स्क्रीन पर किसी भी एक पॉइंट की बात करेंगे. लेट अस सपोज हम P पॉइंट मार्क कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन. इट इज द पॉइंट से P ऑन द स्क्रीन. बेटा स्लिट्स S1 और S2 से लाइट वेव्स इंटरफियर करेंगी और स्क्रीन के P पॉइंट पे पहुंचेंगी. ओके, तो P पॉइंट पे इंटरफियरिंग लाइट वेव्स पहुंच रही हैं फ्रॉम द स्लिट्स S1 एंड S2. नाउ लेट अस सपोज अब देखिए, ये वाला डिस्टेंस d/2, ये वाला डिस्टेंस d/2, दिस OA एंड OB दोनों d/2, और ये जो डिस्टेंस होगा OP, इट विल बी इक्वल टू से y. So since this distance, the distance S1 S2, it is equals to small d, the distance between the two slits, and capital D I had already told you that is it is the distance of the screen from the plane of the slits. OA is equals to say OB is equals to say d/2, and this OP is equals to say y. Got it sense? तो ये हमारा सेटअप है. ओके, अब हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स, और पाथ डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन है वो हम y की टर्म्स में ऑब्टेन करेंगे. क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये फिगर आपने कॉपी करना है, ये मार्किंग्स कॉपी करनी है. मैं आपको कंसीडरेशंस दे रहा हूं. सपोज द स्लिट्स S1 and S2 are illuminated by the monochromatic source of light S, which is equidistant from the two slits. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप, the light waves arriving at the point O from the slits S1 and S2 interferes constructively and the bright band is formed at the point O. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, suppose the light waves arrives at any point P on the screen from the slits S1 and S2, and x, small x, be the path difference between the light waves. तो ध्यान से देखिए, S1 से लाइट P पे पहुंच रही है, S2 से लाइट P पॉइंट पे पहुंच रही है, दोनों पाथ लेंथ्स आपको डिफरेंट दिखाई दे रही है, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा. तो सिंस जो पाथ डिफरेंस है दैट इज सपोज से x एंड इट इज रिटन एज से S2P माइनस S1P. बेटा ये जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है S2P, ये आपको S1P से बड़ा दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब बेटा हम क्या करने वाले हैं, हम S2P का वैल्यू और S1P का वैल्यू डिस्टेंसेस की टर्म्स में ऑब्टेन करने वाले हैं. नाउ इन द राइट ट्रायंगल लेट अस सपोज इट इज S2BP. S2BP. It is S2 P square is equals to
it is S2B square plus it is BP square. Now this S2B, it is equals to, say, capital D, the distance of the screen from the plane of the slits. And this BP is equals to, it is Y plus D by 2. Got it? Now we have to just write out the values. So this S2P square is written as capital D square plus it is Y plus say D by 2 square. Okay? Now since we are taking D square as common, it is 1 plus say Y plus say D by 2 by capital D square. It is S2P square. Now since this S2P is written as say D, we are taking the square root. It is 1 plus say Y plus D by 2 by capital D square raised to the power 1 by 2. अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये सेकेंड टर्म आपको दिखाई दे रही है y प्लस डी बाई 2 बाई कैपिटल डी. सिंस ये 1 के कंपैरिजन में काफी छोटी है, तो सिंस इस एक्सप्रेशन को जब हम रिड्यूस करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज बाइनोमियल थ्योरम. तो आप पहले यहां तक कॉपी करेंगे, यहां तक कॉपी करने के बाद आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, नोट करेंगे आप. यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग ऑल द हायर पावर्स ऑफ द सेकंड टर्म, वी गेट, देखिए बाइनोमियल थ्योरम को कैसे यूज करना है, पावर से सिर्फ सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करना. So since this S2P, it can be written as say D 1 plus say 1 by 2 Y plus say D by 2 by capital D square. That's it. Now we are going to call this as the equation number second. आप ये कैलकुलेशन एक बार कॉपी करें. Now since we are going to calculate the value of S1P again in terms of the distances. Now in the right triangle, say S1AP, this S1P square is written as S1A square plus it is AP square. Now this S1A, it is equals to say capital D, and this AP is equals to say Y minus D by 2. We have to just write out the values. So this S1P square is written as say D square plus Y minus say D by 2 square. Again we are taking D square common. So 1 plus Y minus say D by 2 by capital D square. It is S1P square. Now S1P is written as, बेटा S1P ऑब्टेन करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे. It will be D 1 plus say Y minus D by 2 by capital D square whole power 1 by 2. Got it? Now again, the second term is very small when compared with 1. So when we are doing the expansion, we have to use the binomial theorem and we are going to neglect the second term. तो यहां तक कॉपी करने के बाद मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, नोट करिए आप. Using the binomial theorem and neglecting all the higher powers of the second term, we get this S1P is written as say D 1 plus 1 by 2 Y minus D by 2 by capital D square. We are going to call this as the equation number third. Okay, students, आपने यहां तक कॉपी करना है. अब स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, अब बेटा S1P का वैल्यू और S2P का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखें. यूजिंग द इक्वेशन सेकंड एंड द इक्वेशन थर्ड, द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रीरिटन एज, वी आर गोइंग टू रीराइट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, देखिए X was S2P minus S1P. So S2P is D 1 plus say 1 by 2 Y plus D by 2 by capital D square
minus S1P. S1P is D 1 plus say 1 by 2 y minus d by 2 by capital D square. Okay, now we have to do this calculation. We are going to reduce this expression. Now says D is common. D is made common from these two. So we are going to write this as 1 plus 1 by 2 y plus d by 2 by capital D square minus 1 minus 1 by 2 y minus d by 2 by capital D square. Okay, clear? अब बेटा देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. Now this x is equals to say d. It is 1 by 2 y plus say d by 2 by capital D square minus of 1 by 2 y minus d by 2 by capital D square. अब क्या करने वाले? अब बेटा 2 और d square को भी कॉमन लेंगे. Now this can be written as x is d divided by 2d square. 2d square, ये 2 कॉमन गया, d का स्क्वायर है, d का स्क्वायर है, होल पार है, ध्यान से देखिए. Now we are left with y plus say d by 2 square minus of y minus say d by 2 square. D cancelled out. So this x is written as 1 by 2d. It is y square plus d square by 4 plus of yd. इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाय 4 आएगा, प्लस ऑफ वाई डी आएगा. नाउ दिस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4 दे आर कैंसल्ड आउट. सो दिस एक्स इज रिटन एज 1 by 2d. It is twice of y into d. Got it, sirs? So we can say that this distance y is written as, चलिए पहले y को लिखने से पहले x को थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं. यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस x is written as y into small d by capital D. Okay, this implies that this y is written as say x multiplied with capital D divided by small d. So since this y was a distance of any point say p on the screen from the point say O. अब देखिए आप p point का जो distance है from the point O, it is clearly depending on the path difference between the light waves which are arriving at the point O, the distance of the screen from the plane of the slits, and the distance between the slits S1 and S2. Okay, तो फ्रेंड्स आप पहले यहां तक कॉपी करें. नेक्स्ट लाइन में देखें. अब देखिए सर, हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया था जो पाथ डिफरेंस है, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द कंप्लीट वेवलेंथ. That is this x is equals to n times of lambda. Got it, sirs? Okay. और बेटा p पॉइंट पर अगर हम बोल रहे हैं कि ब्राइट बैंड फॉर्म होगा, तो बेटा कौन सा ब्राइट बैंड फॉर्म होगा हमें नहीं पता. तो वी आर गोइंग टू से, वी आर सेइंग दैट द nth ब्राइट बैंड इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट p. Okay. Now, if nth ब्राइट बैंड is formed at the point P, then says we can say that the distance of the nth bright band from the point O, बेटा y को लिखेंगे yn. Yn is the distance of the nth bright band formed at the point P from the point O. It is equals to x का वैल्यू लगाएंगे, it will be n lambda, the path difference, multiplied with capital D divided by small d. Got it, friends? तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, and it is the distance of the nth bright band
formed on the screen from the point O. Okay, now we are going to call this as the equation number say 4th. Got it? अब ध्यान से देखिए, अब देखिए बेटा, when this n is equals to 1, now y1, that is the distance of the first bright band on the screen from the point O, it will be lambda capital D by small d. Okay, now when this n is equals to 2, that is we are talking about the second bright band, the distance of the second bright band from the point O, it will be twice of lambda capital D by small d. Similarly, up to n equals to n minus 1, okay, this yn minus 1, it will be equals to n minus 1 lambda capital D by small d. Okay, clear? अब जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, एक्सेस करते हैं. तो दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स के बीच में डार्क बैंड है और हमें डार्क बैंड का विड्थ कैलकुलेट करना है. समझ आ गई बात? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंस हम कोई भी दो पोजीशंस कंसीडर करेंगे, कॉन्सेक्यूटिव पोजीशंस ऑफ द ब्राइट बैंड्स कंसीडर करेंगे और हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखें यहां, let beta be the fringe width, of the dark band. बेटा ब्राइट बैंड्स की बात हुई है, अभी हमने ब्राइट बैंड्स की पोजीशंस निकाली हैं, तो दो ब्राइट बैंड्स के बीच में डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो बेटा फ्रिंज विड्थ हमें डार्क बैंड का मिलेगा इस कैलकुलेशन से. नाउ दिस बीटा इज रिटन एज say yn minus of yn minus 1. So this beta is written as, this yn was n lambda capital D by small d minus yn minus 1 is, it is n minus 1 lambda capital D by small d. So this beta is written as lambda capital D by small d is made common, it is n minus n plus 1. Okay, this n is cancelled out, so this beta is written as lambda capital D by small d. So it is the expression for the fringe width of the dark band. Let us call this as the equation number say 5th. Okay, तो सिर्फ आप ये कैलकुलेशन एक बार कॉपी करें. तो सिर्फ अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. Positions of the dark bands form on the screen from the point say O, और dark bands के बीच में फॉर्म होगा bright band. तो सिर्फ bright band का fringe width निकालेंगे. ओके, देखते हैं क्या होता है. Now, for destructive interference, now for destructive interferences, the path difference, याद होगा path difference, बेटा lambda by 2 का मल्टीपल था. ठीक है, lambda by 2 का मल्टीपल था और ऑड मल्टीपल था. So this x was say 2n minus 1 lambda by 2. What it says? So we can say that yn is the distance of the nth dark band formed on the screen at the point P from the point say O. बात समझ आ गई? तो सिर्फ ध्यान से देखेंगे आप, तो ध्यान से देखेंगे आप, yn was x capital D by small d.
So this yn is written as it is 2n minus 1 lambda capital D by twice of small d. Got it, students? अब बेटा n की वैल्यूज लगाएंगे. When this n is equals to 1, that means we are talking about the first dark band, the distance of the first dark band from the point 0. So this y1 it will be equals to, it is 2 minus say 1 lambda capital D by twice of d. So it will be lambda capital D by 2d. Got it? Now when this n is equals to 2, then this y2 is written as 2 to 4, 4 minus 1, 3 lambda capital D by 2d. Okay, similarly for the rest of the orders, when this n is equals to say n minus 1, then this yn minus 1 it will be equals to, it is twice of say n minus 1 minus 1 bracket lambda capital D by twice of small d. Okay, तो ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास पोजीशंस आ गई हैं of the different dark bands which are formed on the screen from the central bright band which was formed at the point O. तो point O से dark bands की positions क्लियर हो गई बात? ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुने, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन रहने वाला है. Let us call this as the equation number 6. बेटा nth डार्क बैंड का जब डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम द पॉइंट O, तो आपने इक्वेशन नंबर 6 को यूज करना है. ओके, अब बेटा डार्क बैंड्स के बीच में ब्राइट बैंड फॉर्म होगा. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट बैंड. नाउ लेट अस सपोज से बीटा डैश बी द फ्रिंज विड्थ ऑफ the bright bands. ओके, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? डार्क बैंड की कोई भी दो पोजीशंस लेंगे कॉन्सेक्यूटिव, हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. Now this beta dash is written as, say it is yn minus of yn minus 1. So this beta dash is written as the value for yn, it is 2n minus 1 lambda capital D by twice of d, then minus, it is twice of n minus 1 minus of 1 lambda capital D by twice of d. Got it, sir? Now lambda capital D by twice of d is made common, so this beta dash is written as, say lambda capital D by twice of d is made common, it is say 2n minus 1, और यहां पर देखेंगे it will be minus of say 2n, 2 and minus 1 it will be 3, 2 plus 3. Got it, sir? This 2n cancelled out, so this beta dash is written as, say twice of lambda capital D by twice of small d. This 2 cancelled out, so this beta dash is written as, say lambda capital D by small d. Fine, बेटा बात समझ आ गई? Let us suppose say it is the equation number 7, and this equation 7 is the fringe width of the bright bands. Okay, students? आप ये वाली कैलकुलेशन एक बार कॉपी करेंगे. बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए. सिंस बेटा फ्रिंज विड्थ ब्राइट बैंड का और डार्क बैंड का सेम है. ओके, तो यहां से पूरी डिस्कशन से जो हमने कंक्लूड किया, आप एक स्टेटमेंट लिखें. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क बैंड एंड द ब्राइट बैंड आर इक्वल. ओके, क्लियर? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेट अस सपोज, पहले तो हमने YDSC यंग्स रिवर्सिट एक्सपेरिमेंट एयर में कंडक्ट किया था. ओके, जब एयर में कंडक्ट किया YDSC को, YDSC, the Young's diversity experiment is conducted in air. Okay, and let us suppose say beta 1 is the fringe width. So this beta 1 was say lambda 1 into say capital D by small d. Okay, lambda 1 was the wavelength in air. अब बेटा देखिए, अगर हम YDSC को किसी मीडियम में कंडक्ट करते हैं, क्लियर, तो वेवलेंथ तो डिफरेंट हो जाएगा.
Now, in any medium other than air, okay, क्योंकि सिंस वेवलेंथ में चेंज आएगा तो सिंस फ्रिंज विड्थ में चेंज आएगा. Let us suppose say beta 2 is the fringe width when YDSE, the same setup, is immersed in any liquid, okay, whose refractive index is say mu. So this beta 2 is say lambda 2 into capital D by small d. Okay, so we can say that this beta 1 by beta 2, it is equals to say lambda 1 into capital D by small d multiplied with small d lambda 2 capital D. Small d cancel, d cancel. So this beta 1 by beta 2 is written as say lambda 1 by lambda 2. Okay, and if mu is the refractive index of the medium, then this mu is written as say lambda 1 by lambda 2. So we have to just write out its value over here, and we can say that this beta 1 by beta 2, it is equals to mu. Okay, so since this beta 2, it is equals to beta 1 by mu. Okay, तो since जब YDSE एयर में कंडक्ट किया तो फ्रिंज विड्थ बीटा 1 है, YDSE किसी और मीडियम में कंडक्ट किया, फ्रिंज विड्थ बीटा 2 है, mu is the refractive index of that medium. Okay, तो since the required relationship is this one, तो आप ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करें, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है. ओके, now since this is all for today, and the next lecture we are going to discuss polarization and diffraction of light.